Hello everyone, good evening. Good evening. Good evening. What happened? Only 6 people are there. Maths class are going on. Perhaps that might be the reason. Which class? Maths class. I guess it's after 8, right? Maths class are going the TA session. Okay. So should I wait for a few more minutes or what should I do? Can you guys let them know that it's already 6 o'clock and the instructor is already waiting? It's only a TA session. So can you let them know that? Um Okay, so let's start with the session. So the main thing is today is a doubt session. So have you guys gone through the lectures of week 4 and did the activity questions and the practice assignment? See, I need answers. So there are only Submitted the 7 people here. Sorry. submitted the grade assignment and done the practice assignment as well. Okay, that's nice. What about the other people? I need answers from the others as well. Hello, ma'am. Am I audible? Yes. Yes, you are. Ma'am, please repeat your question again. No, I'm asking that have you guys completed the activity questions and the practice assignment? Like today is Yes, a ma'am. doubt Yes, session, ma'am. right? So have you guys completed that? Yes, ma'am. Is the TA session over for the maths? Uh, uh, it's on 8 p.m. Yeah, it's on 8 p.m., right? So like what session is going on right now? Uh, Yes, computational thinking. No, TA session is still going on. The instructor session is on as at 8, but TA session is hmm. on for the math. Okay, so I'm like there talking are maths 2 TA session. maths 2 TA session. No maths 1. Yes, ma'am. It is on 8 maths 2 TA session, and right now is computational thinking is going on. Oh yeah, whatever it is. So why is the like why no one is joining the session right now? So if you guys are not even joining the session, should we put the sessions like at least let me know if you're not going to come up in the sessions. It's computational thinking. Actually, the problem is both sessions are clashing for a long time. The computer thinking and the static stat one. Yeah, that Yes, is fine. See, that is a TA session and this is an instructor session, right? So like so what is the important session? Like the TA session or the instructor session? TA sessions like in a week there are 4 sessions, right? Yeah. 4 or 5 sessions, yeah. And instructors are like 3 sessions or 2 sessions maximum. That's it. Yeah. So
You guys already know that which is more important, the TA sessions or the instructor sessions, correct? Yes, ma'am. Yeah, that's what. So, what do you want me to do? Because there are only 5 people here. So, what should I do? And nobody is Hello, joining am I right now. audible? Yes. Can there be a week for revision of sort, like a quick revision, introducing all the topics only, just telling these are the topics to revise, like that, a quick revision type of. Okay, I'll Hello? just. Okay, yeah, I'm just sharing my screen. Wait a second. Mhm. Is it a revision session, ma'am? Sorry, Is it a revision session? this is a doubt session, not a revision session. Okay, ma'am. Yeah. Okay. So in week 4, we are going. Okay, so you are hearing it, right? The person who asked me. HP, right? You there? Who asked me to repeat the or give the revision for the week 4? Yes, ma'am. Week for revision, please. Yeah. So you are listening? Yes, ma'am. I'm here. Yeah. So if I'm going to ask something, you have to answer me. Okay. I need the response. Is that clear? Okay, ma'am. I will try. I am having difficulties with week 4. I will try. No, no. I just need that you are listening. I need to know that you are listening to me. That's it. Yes, ma'am. I also have problem in week 4, and Okay. So I need you to guys that I need to know that you guys are listening. So if I'm yes, asking that if you are able to understand it, I need the answers as yes and no. I yes, don't ma'am. need silence in this class. Is that fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, so in V4, what we are going to learn, we are going to learn about the association between the two variables, right? So till V3, what we were learning about relative frequencies and everything if we have like one variable, right? So it was all about the one variable, mean, median, mode, and everything. But now we are dealing with, if let's suppose if we have two, like more than two variables, right? So let's suppose I am having x variable and a y variable, right? So I'm having two variables here. Now, if I'm having two variables, how to know the connection between these two variables, right? So this is all about the association between the two variables. So week 4 is all about the association, understanding the connection between the two variables. Okay. Now we know that variables is of two types, categorical and numerical. What is a categorical variable? Categorical variable is that variable which is qualitative in nature, and numerical variable is that variable which is quantitative in nature. Quantitative. Yes, ma'am. Correct. Okay, so now we will first go through each of the variable, that is categorical and numerical. That means if so the first thing is categorical, that means my x and my y both are categorical in nature. Then if I have to study the association between them, how will I study that? So the first step is I will make a two-way contingency table. Okay, what is a two-way contingency table? Suppose if I have these information. Okay, so the thing is there is I need to know the association between the ownership of smartphone and the gender. What is the association between them? So this ownership of smartphone is also a categorical variable and gender is also a categorical variable, right? So I need to know the association between these two variables here. Okay, so what are information I do have? I have that there are 44 females, we have 56 males, we have 76 people who are owning a smartphone, we have 24 people who are not owning a smartphone, we have 34 people who are female and owning a smartphone, and 42 people who are males and owning a smartphone. So these are all the things, the information that we have. Now, with the help of this information, we have to make a two-way contingency table. Okay, so what is a two-way contingency table? That means it is a 2 by 2 table. Okay, so that means two column and two rows. Okay, that is the point. So we have one column as ownership of smartphone. Okay, so in that we have two columns, which is yes and no.
Similarly, we have a gender column in which we have two rows, that is female and male. Okay, so this is our two-way contingency table. So according to this data, we fill up this table here. So if you see here, the female who is owning a smartphone is 34. Female who are not owning a smartphone is 10. So in total, we have 44 females here. Similarly, male, in total, we have 56, out of which 42 are owning a smartphone and 14 are not owning a smartphone. So this is how I make from the information given, I make a two-way contingency table. Is that thing clear? Yes, ma'am. Okay. Now, similarly, I have information. I want to know the association between owning a smartphone and the income level. Okay. So the income level is in the sense of an ordinal variable. That means I have the situations like whether the person is having low income, medium income, or high income. So according to that, I have some information. I will just fill up this columns or the rows, you can say. Okay. So I have two contingency table here. So the first thing is the contingency table between the owning a smartphone and a gender. The second contingency table is owning a smartphone and the income level. So the first step of calculating the association between two categorical variable is making a two-way contingency table. Clear? Yes, ma'am. Okay. Then the second part is we have relative frequency. So we need to quantify it, right? So like I need a point, I need to know like how will I calculate the association. So the second step is I will calculate the relative frequency. What is the formula of relative frequency? Total sum particular frequency by sum. By okay. So it is Total. basically total Frequency. observation. Yes, ma'am. Okay, so relative frequency is basically the frequency divided by the total frequency. Okay, Yes. so if I have a table, so this is my contingency table between owning a smartphone and the gender. Okay, so we have this value that is 10, 34 and all. So in relative frequency, we have two types of relative frequency. The first thing is row relative frequency and the second is column relative frequency. What is a row relative frequency? That means each of the cell of a row. So that means this 10 will be divided by the total of that row frequency. That means 10 Even. divided by 44. So this is my row relative frequency. Similarly, 34 divided by 44, row relative frequency. 14 by 56, 42 by 56, 24 by 100 and 76 by 100. So this thing that we have calculated is row relative frequency. That means my row relative frequency is that relative frequency in which we divide this each cell frequency by its row total. That is my row relative frequency. Is that thing clear? Yes, ma'am. Okay. Now, similarly, we have column relative frequency. What is a column relative frequency? That each cell of that column is being divided by its column total. That is 10. So here the total is 24. So it is 10 by 24, 14 by 24, 34 by 76, 42 by 76, 44 by 100, 56 by 100. Is the relative frequency clear? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, like, why you are finding this relative frequency? What is the purpose? Like, a question will be. Is the topic relative frequency clear? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. Now Yes. we have, yeah. So the second step is clear. So my second step was calculating the relative frequency. Now I have calculated the relative frequency. Now, what are the conditions to check whether there is an association or not? So there are two rules. So the first rule is if my row relative frequency is same for all rows, then, or you can say if my column relative frequency is same for all columns, then I say there is no association. The second rule is if my row relative frequency is different for some rows or the column relative frequency is different from some columns, we say there is an association. Okay, so these are the two rules that you have to remember. Okay, so the first rule is if my row relative or the column relative frequency is same for all columns or row. So if you see here, this is my one table, okay, which tells me about the ownership and the gender. So I calculated the row relative 10 by 44, 14 by 56. So I just calculated the in the percentage form. Okay. So now if you see here, okay, I calculated the row relative frequency. This is my row relative frequency. Okay. So this is my row relative frequency. I calculated this. So now
If you see here, the total percentage of people who are owning a smartphone is 76%, and the total people who are not owning a smartphone is 24%. That is, the pattern is that the people who are owning is 76% and who are not owning is 24%. Now we will check for each row here. Okay, so that means for each row, in the sense we will check for each gender. So the female who are own the percentage of female who are owning a smartphone is 77%, who are not 22, or you can say 23%. Similarly, for the male, it is 75% and 25%. So from the total, we see that 76% were owning a smartphone and 25% not owning. Similarly, in each of the gender also, the pattern that it has been followed, right? 77%, 23%, 75%, 25%. So there is a pattern here, correct? Yes, ma'am. Yeah. So that means my row relative frequency is same for all rows. Yes, ma'am. Yes. Okay. This is the same Okay. thing. We don't calculate the difference Okay, between the association. two values here. Okay. We don't calculate the difference. We see the pattern. Okay. So the pattern is 76%, 25, 24%. So we need this pattern to be followed in each of the rows. 77%, 23%, 75%, 25%. So there should be a pattern to be followed. Okay. Okay, ma'am. So the pattern is only for the columns. The pattern is for only the columns, in the sense, yeah. So see, we are talking about the row relative frequency. So we will be talking about each of the rows here. Like what pattern is being followed in one row. So this is the pattern that is being followed in one row. So this pattern should followed in each of the rows. Like that. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so if we see here, there is no difference here. We can't see any differences in the pattern, so we say there is no association. Okay, now similarly, I made a table for the ownership of smartphone and the income level. So I calculated all the percentage here. Similarly, I will calculate the relative frequency. If I see, so the pattern is like the people who are not owning a smartphone are 38%, and who are owning a smartphone is 62%. So the pattern is like 38% and 62%. But if I check this pattern in each of the rows, I see that it's 10%, 90%, 40%, 59%, 64%, 35. So there is no pattern that is being followed here, correct? Yes, ma'am. So Yeah. okay, there is no there Yeah. is still So no association yeah. of sort. Correct. So there is a difference between that. The row relative frequency is not same for all the rows, or you can say for some of the rows. So that's why there is an association. If there is a difference in the pattern, we say there is an association between the two variables. So from this content, we say that my ownership of a smartphone and gender is not at all associated, but ownership and of a smartphone and the income level is being associated here. So income level matters while owning a smartphone, but gender does not matter. Is that thing clear? Okay. Is this clear? Ma'am, if it Yes, is ma'am, it's clear. Okay. ma'am, Yes. uh, uh, can you please make a dummy chart where it is not associate? So I told you, no, this is not associated. 77%. The pattern is same, right? 77, 23, 75, 25, 76, 24. It's the same pattern. So there is no association. Okay. okay, and Okay. Hmm. somewhere I read that it is the 77, 75, 76. It is the same same kind of frequency, so also there is no pattern. So Yeah, that is one. No? So so from the total from people who are owning a smartphone is like 76%. So if you see here in the female also there's like 77% and 75. So they are kind of like similar to each other, right? yes, On the ma'am. whole, it is similar, correct? Yes, ma'am. Yeah, that's what. Oh, Now, okay. okay.
Okay, ma'am. Now I understood. Actually, I got confused. I was taking the row wise, but I have learned somewhere that it is a column wise pattern. So that's why. Now understood, ma'am. Thank you. Okay. Now we have the third thing is, so this is how this is one way how we can study the association between the two variables. Then there is another one which I can study graphically. Okay, so by graphically means by stack bar chart. What is a stack bar chart? We know that this is a bar chart. What is a bar chart? It's having x-axis and a y-axis, in which the bars is actually telling me the count or the frequency of that particular variable, correct? Yes, ma'am. Yes, That is ma'am. my simple bar chart. Now, what is a stack bar chart? That means I have, let's suppose I have two variables here, right? The first, for the gender, I have two variables, which is female and a male, correct? So I have two variables. Now, for this, my one bar would be telling me the count of the females, it is 44. And the second bar will be like 56, which is the male count, correct? Now, in this bar, what I will be making, I will be stacking the two segments here. So what are the two segments? That means owning a smartphone or not owning a smartphone. So if you see here, this percentage, this blue marking is basically telling me the percentage of female people who are owning a smartphone. And the blue part in this term, we see that it is the percentage of male who are owning a smartphone. Correct? And the red part is actually the people who are not owning a smartphone. So stack bar chart is we are stacking the conditions in one bar. Is that thing clear? So this is a stack bar chart. So from this stack bar chart also we can see that or you can say clearly, so there is one more thing as 100% stack bar chart. Okay, so this is like normal stack bar chart in which the count is being we are considering the count. Okay, but in 100% stack bar chart we are not considering the count, we are considering the proportion. Okay, so if you see here, my female and male, both the bars are of same height. Okay, now we are stacking the percentages of owning a smartphone in this bar. So if you see here, this is like 77%, right? And this is like 75%. So if you see here, both the bars are like having, like, there is no difference in the pattern. Yes, from this Yes. graph. Yeah, correct. So Yeah. from the graph also I can say that there is no association between the ownership of a smartphone and the gender. Similarly, if I make 100% stack bar chart for the association between ownership of a smartphone and the income level, I see a graph like this. Okay, so if you see here, all my percentages, like all the graph is showing a different pattern. Correct? Yeah, Yes or ma'am. no? Yeah, Yes, Yes, ma'am. yes. correct. Yeah. So from the graph also I can make I can also study and I can also conclude that there is an association between the ownership of a smartphone and the income level. Okay, so this is the first thing. This is how we study the association between the two categorical variables. Is that clear? Yes, ma'am. Ma'am, can you repeat the sentence? This is how we study the association between two categorical variables. The first thing is the contingency table, then the relative frequency, and then the stack bar chart. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. Okay. Now we have the numerical variables. Okay, so now it was earlier, it was we were having condition that the two variables are categorical. Now we have on the next condition is that they both are numerical. Okay, when they are both numericals, how we will study this association? So the first thing is graphically we can study by scatter plot. Okay, what is a scatter plot? Same, we have an x-axis, we have an y-axis. In x-axis the variables are actually explanatory variable, and the y-axis is basically my response variable. Okay, what is, so let's suppose I have two variables, so this is my x and this is my y. So my x is like, one variable is age and the other variable is height. Okay, so now in this we have to see whether which is my explanatory variable and which is my response variable. So if you see here, my age is an explanatory variable and my height is an response variable. Yes or no? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Yes. So scatter plot is basically what we are pointing. We are making points about the two axes. Or let's say I have these 2 points like 1 and 75, right? So I can write it as 1.75.
1 by 75, or your 2 comma 85, 3 comma 94, 4 comma 101, 5 comma 108. So these are my points. So I'm going to point it out. I am going to make a graph for this points. Okay, so this is my scatter plot. So if I see here, this dot is 1 by 1 comma 75, 2 comma 85, 3 comma 94, 4 comma 101, and 5 comma 108. Okay, so this is what my scatter plot is. Okay, x-axis is explanatory and my y is response variable. Is this thing clear? Scatter plot is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now I have drawn the scatter plot. Now from the scatter plot that I have, how to study that? Okay, so if I need to know the association, there are four things that I have to consider it. How to describe the scatter plot? So the first thing is I will see for the direction. Direction in the sense if it going upwards or if it going downwards. If you see in this graph, my the scatter plot. If you see this graph, it is the direction is going upwards. Correct? This is going downwards. So the first thing that I will see is whether it's going upwards or whether it is going downwards. And the second point that I will see is whether the curvature. That means if my scatter plot is in linear condition or it's having a curve here. Okay, so there are two things, linear and curve. So but in this week, or you can say in this session or something, we will be learning about the linear association only, not the curvature thing. Okay, then the third point is we will see whether it's clustered, whether the points, the data points, if you see here, are clustered or there is a variation here, or you can say there is a variability in the data points. And the fourth part is we will check for the outliers. Okay, so these are the four things that we use to describe the association between the two variables. So the first thing is to check the direction, whether up and down, curvature, whether it's linear or curve. We see the variation in the sense if my data points are clustered together to each other or there is a variability in the data point. And the last point is we check for the outliers. Is this thing clear? Yes, ma'am. Can you tell the last one again? Outliers. What do you mean by outliers? Outliers means which are very, like the data points which are very extreme compared to the rest of the data points, right? So let's suppose my, like there are if let's suppose there are 60 people or something. Okay, from that, like 80 60, from that, like 58 people or something, or 57 people are having some average marks or something, like the marks are like closest to each other, but the rest of the two students are having like 100 marks, so they are like very extreme people, right? So they are like outliers in the sense that very different, very unique values compared to the rest of the data. So that are my outliers. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. So this is how you describe a scatter plot. Okay, so this is how I study the association graphically. Now, if I have to quantify that, see, we are dealing with the numerical variables. Okay, numerical variable in the sense we are dealing with a quantitative variable. Now, if I have a quantitative variable, I have to quantify the association between the two variables, correct? So this was all about graphic things, okay, graph thing. But if I have to quantify it, I will use two things. The first thing is the covariance. What is the covariance? Covariance is telling us the strength of linear association. See, we are dealing about with linear association. There is no curve or something. So the data points are linear to each other. So covariance is basically the strength of linear association between two numerical variables. Okay, so now the formula of covariance is summation of xi minus x bar, yi minus y bar divided by n. Okay, so divided by n in the sense if we are dealing with population covariance, we divide it by capital N. If we are dealing with sample covariance, we divide it by n minus 1. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Similarly, like we had that formula, na? Population standard deviation and or population variance or sample variance or sample standard deviation. If it's population, we divide it by the capital N, and if it's sample, we divide it by the small n minus 1. Correct? So similarly, it goes with the covariance as well. Okay. So let's suppose I have two variables x and y. These are my data points here. Okay. So the first thing is, if you see in this formula, first we have to calculate
x bar and y bar, right? So we will calculate x bar and y bar. So for x bar, that means the mean of these data, which is 3, and the mean of this data is 4. Now the second point is we have to calculate xi minus x bar and yi minus y bar. So that means all of each of the data points will be subtracted by the mean. That is 1 minus 3, then 2 minus 3, 3 minus 3, 4 minus 3, and 5 minus 3. Okay, so this is my xi minus x bar. Similarly, yi minus y bar, 6 minus 5. Sorry, what is the value? 6, 4. 6 minus 4, 5 minus 4, 4 minus 4, 3 minus 4, and 2 minus 4. So this is my yi minus y bar. Now, the thing is, we have to calculate the summation of the product of these 2 points. So we will first multiply both of these points and we will sum it out. So it is minus 10. So my population covariance is summation of xi minus x bar into yi minus y bar, which is minus 10 divided by capital N. So there are 5 points here, right? So my capital N is 5 here. So minus 10 by 5. And if I have to calculate the sample covariance, it will be n minus 1, which is 5 minus 1, which is minus 10 divided by 4, which is minus 2.5. Is this thing clear? Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, it will only work when there is an association and not when there is not an association, like in the mobile case. Sorry? You tell that you just said that it will work for the association case, but the mobile case which you was told, so in the mobile there was no association, right? So this will not work in the mobile case. No, that is a categorical variable. Na? Here we are dealing with the numerical variables. Na? Okay. That both are different things. Okay. Now, if you see here, my covariance is getting to be negative. Okay. So what do you mean by this negative, or we can have a positive covariance as well? So now if my covariance is positive, I say that my two variables are going in the same direction. That means if my x is increasing, my y is also increasing. If my x is decreasing, my y is also decreasing. Okay. Similarly, if my covariance is getting negative, that means they are going in opposite direction. So if my x is increasing, my y will decrease. If my x is decreasing, my y will increase. Okay. So this positive and negative, the sign actually tells me the direction in which direction the two variables are going. If it's positive, they're going in same direction. If it's negative, they are going in opposite direction. Is that thing clear? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Okay. Okay, just Now one the more question. Hmm. Will covariance not work for the non-associative one, right? If the data is not associated, it will not work. The What covariance. we are doing actually, we are studying the association, right? We are quantifying the association. We are quantifyingly telling like what is the strength of the association between the two variables. So the strength is like 2, the strength is like 2.5, and it's minus 2 in the sense it's going in decreasing, like in the negative direction. That means they are both in opposite direction. So that if my x is increasing, my y is decreasing. So this is what this quantity is telling me about the association between the two variables. Is that thing clear? Yes, ma'am. So we are studying with this, like the value that we have calculated from this value, we actually study the association. Okay. So beforehand, we don't get the information that the if they are associated or not. If we already have the information that they are associated or not, why we are calculating covariance then? Okay. We don't have to calculate that. So yeah. So the next thing is we studied about the covariance. Then the second term that comes is the correlation. Okay. It is the same as the covariance. Okay. It is also telling me the strength and the direction of the association, linear association between the two variables. But if we already have this covariance, why do we need this correlation? If you see in the formula, it's basically what? This is x variable and this is y variable. This x variable will be having some unit u dash, and this y variable will having some unit as y dash. Okay. So if I calculate this population covariance or sample covariance, if I calculate this covariance, I will get a value with the unit as u dash and y dash, correct? Okay, so let's suppose my x is in years, okay, and my y is in hours. So my answer will be in years into hours. But this quantity is not even valid.
So the main thing is if I have a quantity, the unit should be same, maybe centimeter square, meter square, or in years or in hours, something like only one quantity I should be having. But here I'm having two quantities. So that's why this number is not even valid. So what we have come through, we have come through with another solution, which is the correlation. Okay, what is the correlation? Correlation is my covariance divided by the standard deviation of x into standard deviation of y. Or you can say summation of xi minus x bar, yi minus y bar divided by summation of xi minus xi square into square root of summation of yi minus y bar whole square. So this is the formula of correlation here. Okay. Now, like in covariance, we didn't had any range for the values, right? So range in the sense that we can say that if let's suppose if my correlation is going between -1 to 1, so if I say that it is close to 1, I say that it's a strong positive they are strong positively correlated to each other. If it is close to -1, I say that they're strongly negatively correlated to each other. So I'm quantifying it, and from this quantity, from this range, I am telling that how much strong, like how much weak or strong are they correlated to each other. Okay, so my range of correlation is between -1 and 1. Okay, so if you see here, if it is between 0.75 to 1 or -1 to minus 0.75, I say they are strongly negative or strongly positive correlated. Okay, if it's 0.75 between -0.75 to -0.5 or 0.5 to 0.75, I say they're moderately correlated. If it's between -0.5 to -0.25 or similar in this case as well, we say they are weakly correlated. And if it's between -0.25 to 0.25, we say that they are not at all correlated. So this is how I study the correlation between the two variables. And from the value, the quantity that I get, I check the correlation, like how strongly they are correlated. Is that thing clear? Yes, ma'am. Okay, so the same thing only, I'm calculating, I have x variable, I have y variable, I calculate the first mean, and then I calculated this value, both of these value. Then again, I calculated the multiplication of this value, and putting in the formula, I get -1. So if I see here, my r is equal to -1, that means I'm saying that they are strongly negatively correlated. That means if my x is increasing, my y will decrease, or if my x is decreasing, my y will increase. So they are going in opposite direction, the same thing. Is this thing clear? Yes, ma'am. Yeah. Okay. So this was all about the correlation. Now, if we are studying, so we are actually this thing, correlation, covariance is actually what? My linear association. They're telling me about the linear association between the two variables. Yes? Yes or no? Ma'am, Yes, please ma'am. repeat. I'm saying that my correlation and covariance is actually telling me the strength or the direction of the Yes, linear ma'am. association between the Yes, two ma'am. variables, right? So if I'm talking about the linear equation, if it's a linear association, that means I can have an equation of a line associated with it, correct? Yes, ma'am. Right? So now I am saying that if I can have a linear association, so this linear association, I can also quantify the association with the help of an equation of a line. Okay, so now we are going to study the association with the help of an equation of a line. Okay, now the point is, this is not like you don't have to go like deep into this. So the main thing is, if we have a data like this, okay, so we have a data. So in this data, what we actually do in like ML or data analysis or something, we fit a line here. Okay, this line is actually denoting our data. Okay, so now as we fit this line, this is like a line, so it is having some equation which is y is equals to mx plus c. Okay, now I need to know that, so this is like the best fit line, it is called as best fit line. Now I need to know whether how much, like how best is this line, how best it is defining these data. So we calculate r square for this. Okay, so now let's suppose I'm having this graph and I have a best fit line here. Okay, this best fit line is having one equation which is y is equals to mx plus c. Okay, in which my y is actually my price, m is 30.5, x is size, and c is my 36. Okay, so this is actually my y, m, x, and c.
So this is the equation of this line actually. Okay, now if I have got this line, okay, from this line I calculated my r square, which is coming out to be 0.647. So this is the, like you can say, this is the like how my how is this line a good fit for the data. So it is like 0.647. Okay, now if, one more thing is, we know that like from this equation or something, from this data I calculated my correlation here, which is coming out to be 0.804. So if I square this value, it is coming out to be equal to my capital R square. Okay, so this is the condition between R's capital R square and small r, correlation and the goodness of fit line. Okay, now from this R square, we are actually telling us how good is the line. Okay, now we know that my R is basically between -1 and 1. And my R square is basically what? The square of this quantity, right? So if my R is equals to 1, so my R square will be what? -1 whole square, which is equal to 1. Similarly, if my R is 1, my R square will be equal to 1 square, which is equal to 1. So if you see here, my range of R square is going from 0 to 1 only. Okay, so if my R square is like coming closer to 1, I say that it is a very good line. If it is coming closer to 0, I say it's a not good fit. Okay, so let's suppose if my R square is coming out to be 0.02, which is basically closer to 0, so I say that it is not a good fit. Okay, if it's close like 0.8, that means it is closer to 1, so I say that it's a good fit line. Is R square thing clear? Yes, ma'am. Yeah. Yes, Okay, ma'am. you don't have to go deep into this topic. Okay, so the main thing is you should know what is an R square. That's it. Okay. Ma'am, I have a doubt from this topic. What's your doubt? Ma'am, actually, this doubt about the definition of R square, where the definition in AQ in activity question, there is mention about the definition of R square, and Huh. that definition is ended with explanatory variable. But I have read this definition in the textbook, which is provided by the course material, and here Hmm. the R square is actually uh, explained by the line. So Correct. I'm like confused that what actually the difference between the explanatory variable and the line. Does that definition which is present in the AQ is wrong or right? Because but No, the answer that is also right. See, if you see, they are saying that R square is okay. Let me just open that thing. Hmm. Give me a moment. Okay. So this is the question that you're saying, right? R square is first option is the measure of direction of linear association between two variables, measure of proportion of the variance in the data set explained by the explanatory variable, the measure of goodness of fit of the line to the data set, not the measure. So the first thing is I told you that my R square, what is my R square? It is the measure of goodness of fit of the line, correct? Yes, ma'am. Option number That I 3. explained. Okay. Now, if you see here, the first option, the measure of direction of linear, it is not telling me the direction of the linear association. My R square, if you remember, my R square is basically what? The line that I'm fitting, which is like denoting my data points, correct? yes, ma'am. Yes? Uh, Okay, R let me square, sorry. see. This is what, see, if I see here, these are my data points, and for these data points, I am fitting a line here. Okay, so this is just the measure of goodness of it, like how good is the line,
which is fitting to the data set. That is my R square. Then the other definition that we see here, they're saying that the measure of what? The measure of proportion of the variance, the measure of the proportion of variance in the data set explained by the explanatory variable. So if you see here, we are actually making a scatter plot, right? This is my x-axis, this is my x-axis, and this is my y-axis. So these data points are like the scales, x comma y, x1, x2 comma y2, correct? These are also my scales here, correct? Yes, ma'am. So now if you see here, they are saying that how like the proportion of variance in the data set. So variance in the data sets, like how variability is there in this. Okay, so let's suppose if I'm making a graph like this. Okay, now if I make a line here, you see that my data points is actually not closer to this line, correct? If you see here in this graph, we see that the data points is actually closer to this line. That's why this is a best fit line. Got the Yes, point? ma'am. So that's why they are actually telling me the variance in the data set. How much variability is there? How much variability is being expressed by the explanatory variable? Getting the point? Yes, ma'am. I'm getting the point, but Yeah. the one thing that I didn't get yet is how the variation only explained by the explanatory variable, because the line is made by See, what both do of you the mean by variables. explanatory variable? What is explanatory variable? Which explains things, right? Yes, ma'am. Yeah. So according to the equation, see, I had 2 points, age and height. So my height condition is being explained by the age. Yes? Yes, ma'am. Yeah, so that's my the variability. So whatever there are any changes in the height or something, it is being explained by the explanatory variable. So that is the definition of the explanatory variable. Explanatory, what is an explanatory variable? Which explains the things. Why there is a variation? Why there are changes in the data set? Why there are changes in the height? Because of age. So that's Okay, why ma'am. the variation is being explained by the explanatory variable, not the response variable. Response variable does not show me the variance. Explanatory variable explains me why there is a variance. Got the Okay, point? ma'am. Yes, ma'am. I've got it. Yeah. Thank you, ma'am. Okay. So that's it. Okay. Okay. So like there is one more question. If you see here, they're asking like if the slope of the line of best fit is negative, okay, that means it is going downwards. Then the correlation between the variable Negative. be negative. Correct. Very good. Okay. Now let's continue. So this was the last thing. So this was all about the numerical variable. So if we have a numerical, we calculate the covariance, the correlation, and we also see the R square. Now the last thing is if the two variables we are having, in that one variable is numerical and the other variable is categorical. Okay, if we have this kind of situation, we calculate the point biserial correlation coefficient, okay, whose formula is RPV equals to mod of x bar naught minus x bar 1 divided by the standard deviation of x into the square root of p naught into p1. Okay, what is x bar naught? X bar naught is basically, if you see here in this example, we have number of people here, we have scores, and we have groups here. Groups in the sense how many of them have passed the exam, how many of them have failed the exam. Okay, so here my 0 is representing the fail and 1 is representing the pass. Okay, now x bar naught is basically the average the average of the people who have average marks who have failed the exam. So if you see here, there are two people who have failed the exam, which is 4 and 5. Okay, these are the scores of the students who have failed the exam. So we will take the average of these two. That is my x bar naught. Then next comes is x bar 1, which is same, the average marks of the people who have passed the exam. So if you see here, my three people here have passed the exam. So that means I will take the average of these scores. Okay, which is 8 plus 6 plus 7, which is coming out to be 7. Now, standard deviation of x is basically, this is my numerical quantity. So I can calculate the standard deviation with the help of the formula that we have. Okay, now P naught is basically what? The proportion of students who have failed the exam. How many? The proportion, how many students have failed the exam. So if you see here, from out of 5 people here, 2 people have failed the exam. So the proportion will be what? 2 by 5. P1 similarly, the proportion of students who have passed the exam. So it will be 3 by 5. Now put all the values in the formula, you will get as 0.87. So this is a
this is how you calculate the point biserial correlation coefficient, and from this we check the association between the two, between one numerical and one categorical variable. Is that thing clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, that's good. So, yeah, so there are like 13, 12, 11 people here. So you guys have done all the activity questions and everything. Yes, ma'am. Okay, so are there any doubts in the activity questions or the quizzes assignment? No doubts? Have you guys done the activity questions or the practice Ma'am, assignment? I have a doubt in activity. No, ma'am. Practice assignment 4.1, question 4. Practice assignment 4.1 question 4.1. number 4. Yes, ma'am. Let R be the sample correlation. That question only? Yes, ma'am. Okay. I'll just read the question. Let R be the sample correlation coefficient for the data points. Okay. Then the sample correlation coefficients for the data pairs is provided that B and D have the same sign. So if they have the same sign, so it's okay. So let's see here. If I share the screen, this one. Okay. So this is the question. So they are saying that if R be the sample correlation coefficient for the data pairs, then the sample correlation for the data pairs A plus BXI, C plus DY, provided that B and D have the same sign is. So let's suppose we are considering that the sample correlation coefficient for the data pairs A plus BXI are R dash. Okay. Now we are considering that my B and D are positive. Okay. So if my B and D are positive, so we are first calculating the, so if we are calculating the correlation, right? So correlation is basically what? Summation of xi minus x bar, yi minus y bar divided by summation of standard deviation of x into standard deviation of y, correct? So first we calculated the mean. For xi and y bar, it is x bar and y bar, and the standard deviation is sx and s5. Okay, similarly, for the data points for a plus bxi and all, the mean will be a plus bx bar, comma c plus dy bar. Similarly, for the standard deviation will be b into sx and d into sy. So if I put this whole value into this r dash, what is r dash? R dash is basically my sample correlation coefficient. Okay, if you see here, I am getting the summation. If I just calculate this, I am getting it equal to the r, which is the correlation coefficient. So r is basically the sample correlation coefficient for the data points xi and yi. So it is coming out to be same. Okay, then Yes, ma'am. yeah, so that's why. So if I see here, so if I'm talking about the data points A plus BXI and C plus DY, I'm getting the same correlation coefficient. So it will be equal to R here. Getting my point? Yes, ma'am. Got it. Yeah. Thank you, ma'am. Ma'am, in same question, if it has a different sign means it will be minus or, right, ma'am? Huh. Like if they have different, one is negative and one is positive, then we will have a different signs like minus. Okay, ma'am. Okay. Okay. Anything else? Yes.
Hello? Hello? Yes, ma'am. Yeah, any other doubts? What? What? Good evening, Any, ma'am. any other doubts? No. Ma'am, can we today practice PIQs? The previous year questions? Yes, ma'am. Okay. The previous year questions, like, do you have any questions in your mind? Hello. Yes. Good evening, ma'am. Yes. Uh, in the last of the session, Sorry? can I out in the last? Can you just speak up a little, like, a little more louder? I'm not able to hear you. Hello. Hello. Yeah, tell me. Can I ask my doubts in the last of the session? Actually, I have doubts in. Yeah, you like, I guess there are no more doubts right now. Are there any Okay. more doubts for anyone? Any more doubt that has to be cleared? No, ma'am. No, right? So I guess you can continue. Yeah. Ma'am, Yes. week 2, AQ number 2.5. Sorry? Week 2 से start करते हैं. Week 2. Yeah. Week 2, question number? Week 2, which one? 2.5 AQ. AQ 2.5. Yeah. Question number 6. Question number? 6. Hello? Question number? Yeah. Question number 6, ma'am. Question number 6. Statement: mean is a measure of central tendency for a categorical variable. Which of the following options are correct about the statement? Ma'am, Categorical can you variable. share a screen so that I can Okay, understand? Question. just give me a moment. I'll just share the screen. So this is the question. So the statement is mean is the measure of central tendency for a categorical variable. So now okay. So the first thing is they are saying that mean is a measure of central tendency for a categorical variable. Can you tell me whether we can calculate the mean for a categorical variable? I think no, ma'am. No, right? So that means this is already a false statement. So we will only check. So they're saying that true. So we won't be considering the first option and the third option. Why? Because they're saying that the statement is true, but the statement is false. Okay. So we will only be considering the second option and fourth option. Okay. So now Yeah. the first. Now the statement is, the reason is a categorical variable can have numerical variables, but the mean of the variable does not exist. Even though the order of the data exists in a categorical variable with an ordinal scale of measurement, the mean of the variable will not exist. So both of the statements are saying the same thing. So categorical variable can have numerical variable values, or ordinally can be an ordinal scale of measurement, but we can't calculate the mean of the variable, or the mean of the variable does not exist. So that's why my option B and option C are correct. Is this fine? Sorry? Hello. Hello? Okay, ma'am. Actually, at that time, I was not read there because Sorry? yes, Can you just mean. connect with any other device or something? Maybe there is some issue with your mic or some. I don't know. Okay, ma'am. Let's connect your. Ma'am, wait a minute, ma'am. Yeah.
Ma'am, quiz wins syllabus will be week 1 to 4, right? Yes. Okay. Hello, Hello? I'm audible, ma'am. Yeah, now you're audible. Okay, ma'am. Please share the screen of that question. The screen is being shared. Tell me. Hello? Hello. Yeah, speak up. Wait, ma'am. एक minute. Huh? Uh, wait, ma'am. 15 seconds. Can you speak a bit louder? अभी जा रही है आवाज मैम? हेलो. हाँ, आवाज जा रही है बट थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात एक बार. ओके ओके. हाँ. मैम, मुझे मतलब एक्सप्लेन कीजिए ना कि जो मीन है कैटेगरिकल हम्म. डेटा का क्यों नहीं ले सकते हैं, जबकि मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ठीक है, बट मीन क्या समझ होता है? मीन क्या मीन होता है? टोटल नंबर ऑफ सॉरी एडिशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम्म. डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. हाँ, तो मीन बेसिकली हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा एवरेज, राइट? हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं. एवरेज का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी सम ऑफ दो जो भी नंबर्स हैं डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. करेक्ट. सो मान के चलो जैसे मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 एंड 5. ये हमारे पास नंबर है, ये हमारा एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है. ठीक है. ओके. ये क्वांटिटी है, तो इस नंबर का मैं जब ऐड करती हूँ 1 + 2 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरा कुछ नंबर निकलता है. ठीक है. तो ये मेरा क्या होता है, मीन होता है. अब जैसे मान के चलो तुम कैटेगोरिकल की बात कर रहे हो, तो 1 0 0 1 ये 1 मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि बच्चे कितने पास हुए हैं, और ये 0 मत बता रहा है कि एक फेल हुआ है. ठीक है. ये हमारा क्या, तो ये बताओ मुझे कि ये जो चीज, ये जो डेटा मैंने अभी दिया है तुमको, कि ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है या कैटेगोरिकल वेरिएबल है? न्यूमेरिकल. ये न्यूमेरिकल है. नो नो, अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कैटेगोरिकल होगा फिर. हाँ, तो ये मेरा कैटेगोरिकल हुआ ना. ठीक हाँ है. इसी. अगर तो इस कैटेगोरिकल वेरिएबल का मैं मीन निकाल सकती हूँ, मतलब वो अगर मैंने मीन निकाल भी लिया 1 + 0 +, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ कुछ सेंस बनेगा? नो नो. हाँ. तो इस वजह से खाली न्यूमेरिकल वेरिएबल का ही हम मीन निकाल सकते हैं, कैटेगोरिकल का नहीं निकाल सकते. क्लियर है? जी मैम. हाँ. हाँ मैम, प्रैक्टिस असाइनमेंट 2.1. हम्म. 2.1 का. हेलो. 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 हाँ. 2.1 का. आई एम एडेबल मैम. हेलो. हाँ हाँ, बोलो. मैम, प्रैक्टिस असाइनमेंट 2.1 क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. A study conducted in the last 10 years shows how students choose different streams after completing 10 standard. The outcome of this study is given in figure this. What percentage of students have chosen biology or politics? 20. So biology है 10%, politics है 10%. So add हो जाएगा 10% plus 10%, 20%. Right? 20%. क्या कंफ्यूजन है? एक्चुअली उस टाइम पे क्या होता है ना मैम कि उस टाइम पे समझ में नहीं आता है, बट अभी 4 और भी पढ़ने के बाद ना मतलब ये सब चीज फिर मैं बिना देखे आ गया था इसके लिए.
नहीं सब क्लियर नहीं किया था। तभी पता चल गया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? हाँ हाँ, एक्चुअली उस ठीक टाइम है। पे ऐड नहीं कर रहा था मैं, बस सिर्फ हम्म। एक डेटा देख के मैं ये कर दे रहा था। ओके ओके। प्रैक्टिस असाइनमेंट 2.2 मैम, हम्म। क्वेश्चन नंबर 4। ओ, a contract for sports jersey of 45 players in a team is being given to a vendor. All the players except two give the preferred size from among the categories. Two players A and B do not know which size will fit them. Assume the data is unimodel. If player A knows that most of them have similar physics. Okay, देखो। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हमारे पास 45 प्लेयर्स हैं इन टोटल। ठीक है, 45 प्लेयर्स हैं, उनमें से दो प्लेयर्स हैं ए एंड बी। ठीक है, इनका अभी शर्ट्स बने नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपना प्रेफर्ड साइज अभी उनको पता नहीं है कौन सा साइज उनको फिट होगा। ठीक है, बाकी सब लोगों ने अपना प्रेफर्ड साइज बताया। प्रेफर्ड साइज क्या है? या तो एक्सेल होगा, या लार्ज होगा, या मीडियम होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, ये हमारे प्रेफर्ड साइजेस हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ प्लेयर ए नोज दैट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैव अ सिमिलर फिजिक टू हिम। मतलब ए जो कह रहा है कि जो ए का जो भी बॉडी जो फिजिकल होगा वो सेम होगा बाकी सब लोग जो भी 43 प्लेयर्स हैं, ठीक है, उन्हीं के बराबर होगा। ठीक है, तो वो कौन सा जर्सी ऑर्डर करेगा? ठीक है, दैट मीन्स वो क्या देख के चल रहा है? वो मॉड लेके चल रहा यस मैम, है ना? मॉड हमारा क्या होता है कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड हो। होता है। यस मैम। ठीक है, तो वो मॉड से हमें ये पता लग सकता है कि मैक्सिमम लोगों ने क्या साइज प्रेफर किया है ना? हम्म। ठीक है, सिमिलरली अब जैसे ऑप्शंस में अगर तुम देखोगे, हमारा ऑप्शंस क्या है? साइज एम जर्सी इफ इट इज मोड ऑफ द साइज ऑफ जर्सी। सो साइज जो एम है वो हमारा मोड, क्योंकि देखो हमें अभी एक्चुअली में पता नहीं है क्या कौन सा साइज मोड है, कौन सा मीडियन है, कौन सा मीन है, क्या हमें कुछ पता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो अभी हम लेके चल रहे हैं कि अगर मेरा साइज एम अगर मेरा मॉड होता है तो वो साइज एम चूज करेगा। अगर मेरा साइज एस मॉड होता है तब भी वो साइज एस चूज करेगा, क्योंकि वो ए क्या कह रहा है कि जो कॉमन लोग जितना लोग ले रहे हैं वही मेरा साइज होगा। तो उस वजह से या तो वो एम साइज ले सकता है या तो वो एस साइज ले सकता है। फिर दूसरे जो ऑप्शंस है हमारा क्या है कि साइज इन जर्सी इफ इट इज द मीडियन ऑफ। तो मीडियन क्या होता है? जो हमारा मिडिल वैल्यू हो गया, करेक्ट? मिडिल वैल्यू तो होता अगर है। हाँ, तो मिडिल वैल्यू क्या हो गया? जैसे मान के चलो ये मेरा डॉट क्लियर हो गया स्मॉल मैम वैसे यहाँ पे। स्मॉल स्मॉल, ठीक है, ऐसे एम 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 एम। सो दैट मीन्स मेरा एम जो है वो ज्यादा मिडिल वैल्यू में है, करेक्ट? यस मैम। राइट, एम हो गया। अब इसमें बेसिकली एम, सॉरी, एस 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 हो गया, फिर एम एम, फिर लार्ज, फिर एक्सेल और समथिंग। ठीक है, अब दो ऑप्शंस अगर तुम पढ़ोगे तो इसमें क्या आ रहा है कि साइज एम इफ इट इज द मीडियन ऑफ द जर्सी, और साइज एस इफ इट इज द मीडियन ऑफ द साइज ऑफ द जर्सी। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, सबसे पहले मैं कह रही हूँ कि मेरा साइज एम जो है वो मीडियन है। ठीक है, अब मेरे पास ये चीज डेटा है, अब इसका मीडियन मान के चलो मेरा एम यहाँ आ रहा है, बट यहाँ पे तो यस ये मैम। जो मीडियम साइज है मेरे पास दो बार ही रिपीट हो रहा है ना, यस। करेक्ट? तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो साइज एम लेगा, क्योंकि वो क्या ले रहा है कि जो मोस्ट कॉमन जितने जो मैक्सिमम ऑफ द लोगों ने जो साइज लिए वही मैं लूंगा। ठीक है, तो यहाँ और तो खाली हो गया दो लोगों क्लियर ने लिया तो। है, इस वजह से अब यहाँ पे। साइजेस क्या होते हैं? यस मैम। हम्म। तो यहाँ पे मैम साइज, जो हाँ स्मॉल में मोड जो होगा वो भी सेलेक्ट होगा, और इस एम मतलब मीडियम में जो मोड है वो भी सेलेक्ट होगा, बिकॉज अभी हम लोग को हाँ, पता नहीं और है साथ में कि यहाँ पे। साइज एस अगर साइज एस मेरा मीडियन है तो वो भी सेलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे लिख सकती हूँ एस 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 कितना भी रिपीट हो जाएगा। ठीक है, एस एस ये यस कितना मैम। हो गया, फिर आगे एक मीडियन, फिर हो गया मेरा लार्ज, फिर मेरा एक्सेल, ऐसे करके जाएगा। तो मेरे पास क्या यस है मैम। इन टोटल? जैसे 43 है तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा? या तो 22 या 23 जो नंबर होगा वो मेरा मीडियन होगा, करेक्ट? यस मैम। हाँ, तो मतलब मेरा 22 नंबर ऑफ द पीपल ने एस साइज लिया है, और बाकी सब ने उसके अलावा बाकी सब लोगों ने मीडियम और लार्ज। तो अगर कंपेयर करेंगे मीडियम, लार्ज और एक्सेल का, 22 ये एस वाला ज्यादा नंबर में है। तो मैं कह सकती हूँ कि साइज एस भी वो ले सकता है अगर मेरा साइज एस यस मीडियम मैम। है यस मैम। है ना? तो इस वजह या से
हाँ, तो इस वजह से कौन से ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे? एक तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन और थर्ड, और फोर्थ ऑप्शन। थर्ड। हाँ या ठीक है। ठीक है। या समझ गया मैम एक्चुअली। हाँ मेरे को इसी की दिक्कत हो रहा होगा एक्चुअली, क्योंकि मीडियम कैसे आया इसके लिए। हाँ, बस इसी वजह से। ठीक है। इसमें मैम थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5। The 43 chosen are arranged in the increasing order. Player B knows that his jersey size is approximately equal to the jersey size of the player with the 22nd ranked jersey size. Which jersey size should be ordered? Size M jersey, if it is the more sizes, if it is the more size M, if it is the median sizes, if it is the median. So B is choosing approximately equal to the jersey size of the player with the 22nd rank. See, अगर आप ये यहाँ देखेंगे 43 चूजन है, 22nd इज बेसिकली मेरा क्या है, मीडियन है। यस ठीक है, मैम। तो वो प्लेयर बी क्या चूज कर रहा है, खाली मीडियन, जो भी साइज जो है वो मेरा जो मीडियन आएगा वही उस साइज को वो चूज करेगा। ठीक है, यस तो मैम। अब मेरा क्या है यहाँ पे, या तो मेरा एम साइज मीडियन हो सकता है, या ठीक है, तो एस हो या तो जाएगा। मेरा एस साइज मीडियन हो सकता है। दोनों ऑप्शन ठीक है। करेक्ट है। हाँ। यस मैम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट Player थोड़ा A and B have identified their preferred sizes and their लगा। preferences have been added. What can be said about the mod of the new data set? Mod of the new data set. So player A ने क्या लिया है, size M sizes, ठीक है, और प्लेयर बी ने मेरा मीडियन लिया है। ठीक है, तो प्लेयर ए ने तो मॉड लिया है। ठीक है, so mod does not change. Mod is not necessarily equal to the jersey size of player A. It is not equal to this. I don't know whether the mod has changed or not. Mod. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा जो प्लेयर ए है वो मॉड साइज ले रहा है, करेक्ट, या तो साइज एम लेगा, जो भी मॉड होगा। ठीक है, अगर हम काउंट भी अगर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो मेरा जो प्लेयर ए है जो साइज वो लेगा वो मेरा या तो मॉड होगा, दैट इज या तो वो एस होगा या तो एम होगा, करेक्ट। यस मैम। ठीक है, अगर वो एस भी लेता है तो मेरा मॉड तो चेंज होगा नहीं, राइट। नहीं। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये मेरा एक यूनी मॉडल है, यूनी मॉडल डेटा है, दैट मीन्स मेरा बस एक ही मॉड एग्जिस्ट एक ही करेगा। मोड सो आएगा। इस, यस हाँ, मैम। सो इस वजह से अगर मैं इंक्रीज भी करूंगी कुछ भी डेटा वैल्यू, मेरा मोड काउंट ही इंक्रीज होगा, तो उस वजह से मेरा मोड तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, और जो प्लेयर बी है वो मेरा क्या है, मीडियन चूज कर रहा है, करेक्ट। यस मैम। सो जरूरी नहीं है कि मेरा जो मीडियन होगा वो मेरा मॉड मॉड के इक्वल होगा, करेक्ट। यस मैम। सो इस वजह से ही जरूरी नहीं है, द मॉड इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू द जर्सी साइज ऑफ द प्लेयर बी। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, फाइन। यस मैम, बट व्हाट इफ कि इस सिनेरियो में अगर चेंज हो जाए तब मैं इस पे क्या कर सकता था? अगर मैं ये सोचता कि अगर चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया? लाइक द मोड डज नॉट चेंज लिख रहा है। हाँ, देखो खाली एक ही चीज वो चूज कर सकता है, ये हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, या तो साइज एम चूज करेगा या साइज एस चूज करेगा, दोनों में से कोई एक चूज करेगा। यस मैम। ठीक है, तो अगर वो साइज एम चूज करेगा दैट मीन्स वो मेरा मॉड है। यस मैम। ठीक है, एम मेरा यहाँ पे मॉड है, तो यहाँ पे अगर मैं अ, अगर मेरा एम मॉड है मतलब वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, बहुत नंबर में है, एम ज्यादा। यस 22 नंबर में है, ज्यादा नंबर में है, करेक्ट। दैट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ अगर मैं डेटा लिखूंगी भी तो मतलब मेरा एक एस इधर है, बाकी सारा सारा मेरा एम है, ये सारे 22 नंबर्स मेरा एम है, तो मेरा ये ज्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, करेक्ट। सो मेरा जो मॉड होगा वो मेरा सेम ही रहेगा, मैम। करेक्ट। अगर मेरा एस यस भी मैम। अगर मॉड आता है, सो मतलब क्या हो गया, मेरा एस जो है वो 22 टाइम्स मेरा क्या है, रिपीट हो रहा है, या फिर 23 टाइम्स भी रिपीट हो सकता है, या 24 टाइम्स मेरा ऐसे ही मॉड भी एम जो मीडियम साइज है वो भी मेरा रिपीट हो सकता है, 23 टाइम्स, 24 टाइम्स, 25 टाइम्स और समथिंग, कुछ भी रिपीट हो सकता है मेरा मॉड। अच्छा, मेरा मीडियम साइज या फिर स्मॉल साइज।
ठीक है, तो अगर मान के चलो कि मेरा जो मीडियम साइज है वो मेरा मॉड है, तो मेरा अगर मॉड है मींस मेरा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, 22, 23, 24 यस समथिंग, तो मेरा जो 22nd वैल्यू होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, मेरा मॉड के इक्वल होगा, यस मैम है ना। सिमिलरली अगर मेरा एस जो है वो एस को चूज करती हूँ, ऐसा अगर हमारा मॉड है, दैट मीन्स एस जो है 22 टाइम्स तो रिपीट हो गई, साथ में 22 से ऊपर 23, 24 टाइम्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मुझे ये पता है जो मेरा मीडियन है वो मेरा क्या है, 22, यस मैम 27, तो तब भी अगर मैं देखूंगी मेरा सेम ही रहेगा, एस ही रहेगा ना। यस यस हाँ, तो उस अगर वजह से मतलब ये मेरा एज मॉड जो अगर है, हाँ इस वजह से मेरा मॉड चेंज नहीं होगा, बट जो मीडियन है और जो मेरा प्लेयर बी है वो मेरा मीडियन चूज कर रहा है, तो मैं कभी नहीं कह सकती, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि जो मेरा मीडियन की जो वैल्यू होगा वो मॉड के इक्वल होगा। वो मोड़ यस और नो। हाँ, समझ गया इस वजह यस से। मैम ठीक है। हाँ यस मैम हाँ मैम इसमें से हाँ एक मिनट। हाँ, मैम क्वेश्चन नंबर 7 ये वन क्वेश्चन बेस्ड है इसके लिए थोड़ा सा एक नहीं बना था वो पूरा नहीं बना have player identified E their and B have identified the preferred based on this what can be said about the median of the data set. मीडियन भी चेंज नहीं होगा, एंड मीडियन इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू द, हाँ तो सेम जो हमने थ्योरी यहाँ पे लगाई है ना, वही सेम थ्योरी यहाँ लगाओ। मीडियन हमारा चेंज होगा नहीं और मीडियन हमारा मॉड के इक्वल होगा नहीं, जो प्लेयर ए जो है वो मॉड बना रहा है, तो जरूरी नहीं है जो हमारा मीडियन है वो मॉड के इक्वल होगा, सेम कंडीशन। ओके मैम मैं इसको पढ़ ठीक है। लूंगा मेरे को मतलब प्रैक्टिस असाइनमेंट 2.2 हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में 1 मिनट, क्या। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 तीन क्वेश्चन और है इसमें अच्छा, प्रैक्टिस what is the relative frequency of the first language speakers for Dravidian languages? रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज करनी है ना, तो तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, ये सारी वैल्यूज है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं इन सब का, जो भी एडिशन एडिशन करके डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी ना। मैम तो तुम एक्चुअली शायद या फिर एक काम कर हमको सकते हो, सब यहाँ पे परसेंटेज पहले से ही दे रखा है, तो सारे परसेंटेजेस को ऐड कर दो, फिर उसको उस नंबर में कन्वर्ट परसेंटेज को करके सारे फिर उसको लैंग्वेजेस को डिवाइड बाय, एडिशन हाँ उसको डिवाइड डिवाइड बाय करना है 100 कर दो तो मतलब पॉइंट आ कि ये जाएगा। टोटल टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन है इन इंडिया इसको ऐड करने के बाद इसको नहीं, नंबर में कन्वर्ट इतना करना है मेहनत क्यों करना है तुम्हें, परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन से परसेंटेज इन्होंने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, तो वो परसेंटेजेस को ऐड कर दो, उसको डिवाइड बाय 100 कर दो, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ठीक है। एक्चुअली मैं क्लियर नहीं हो पाया मैम ये क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता दीजिए ना समझ नहीं पाया हूँ आई थिंक सॉरी। मैं ये बोल रहा हूँ मैम आई थिंक मैं इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाया हूँ तो एक बार क्वेश्चन को समझा दीजिए देखो क्वेश्चन में क्या है कि इंडिया इज अ होम, सो हमें एक क्या बोलते हैं, एक टेबल दिया गया है जिसमें लैंग्वेजेस हैं, कितने लैंग्वेज स्पीकर्स हैं इंडिया में, और परसेंटेज निकाल गया है टोटल पॉपुलेशन का, मतलब 97 लैक्स टू, मतलब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द टोटल ऑब्जर्वेशन इनटू 100, यही होता है हमारा परसेंटेज जैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज वाली वो वैसे ही निकाला है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर्स फॉर द्रविडियन लैंग्वेजेस इन इंडिया। ओके, सो यहाँ पे कन्नड़ा, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु की बात की है, तो हर एक लैंग्वेजेस का तुम बस जो परसेंटेजेस दिया गया है उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 100 कर दो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, क्योंकि इन सबको 100 से मल्टीप्लाई किया गया है ना, तो बस 100 से डिवाइड कर दो तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ठीक है। ओके मैम ओके, क्वेश्चन नंबर 9 9 तो तुम कर ही सकते हो, यहाँ पे बस पेरोटो चार्ट है, बस इस डेटा के अकॉर्डिंग तुम्हें पेरोटो चार्ट चेक करना है कौन सा होगा क्या होगा। ओके मैम हम्म। question number 10 final what is the median of the data set
ओके मैम, वो क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो फिर तो मैं इसको कंसिडर कर ही लूंगा। ग्रेडेड असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 8, सेम रैंक हाउ। ग्रेडेड असाइनमेंट का सॉल्यूशंस नहीं देखे? नहीं देखा है मैम। The data of a number of students बस sharing क्वेश्चन the same rank is collected, which of the represent the collected data. So यहाँ पे कोई डेटा पॉइंट दिया गया है क्या? The data of number of students sharing the same rank. Okay. Suitable to represent the collected data. हाँ, तो कौन सा चार्ट सुटेबल होगा? बस यही बोला गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। डेटा नहीं है क्या? कहा नहीं मैम, एक्चुअली मैं खुद भूल गया हूँ इतने क्वेश्चंस लिख के कि मतलब मैंने क्लियरली लिखा नहीं कि इसमें क्या डाउट, तो बस समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कि इसमें क्या डाउट था। लाइक मेरा ओके, ठीक है। तो हमें एक ग्राफ पता करना है कि कौन सा ग्राफ सही है। तो फर्स्ट ग्राफ में अगर देखोगे, मेरा वाई एक्सेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 5 से हो रहा है। दैट इज अ रॉन्ग ग्राफ। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 0 से होना चाहिए, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन बेस क्या, अगर लाइन यहाँ एरर पे है। देखेंगे, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। यस और मैम। थर्ड ऑप्शन हम ऐसे कर नहीं सकते, रैंकिंग और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे, ये अप्रोप्रिएट नहीं, मतलब बना सकते हैं पर ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है। बट क्वेश्चन में मैम पूछा नहीं है अप्रोप्रिएट, आई थिंक। अप्रोप्रिएट तो पूछा ही है ना, विच ऑफ द सुटेबल है रिप्रेजेंट करने के लिए। Hello. तो हेलो, यस। After this, can you take my आफ्टर दिस, ma'am? I have a doubt in practice assignment 3.1, question number 7, 8. हाँ, आई विल जस्ट टेक दैट। ओके मैम, एक्चुअली वीक 3 के भी क्वेश्चंस है मेरे पास, तो आप अगर वीक 3 में जाएंगे तो फिर 3.1 को कंसीडर कर लीजिएगा। तो वीक 2 का कंप्लीट हो गया। आ, एक और क्वेश्चन है बस वीक 2 में मैम। हाँ, क्वेश्चन नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं, इसमें एक मेरा क्वेश्चन था, मेरा प्रश्न कि मेरे को पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे मैम? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस मैम। प्रीवियस पर पीवाई प्लीज कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस टर्म क्वेश्चन। हाँ, वो आई गेस कोई साइट वगैरह है, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। आई गेस कोई, अगर किसी को आइडिया है तो वो बता सकता है, कोई साइट है। Quiz practice. Search. Quiz practice. ओके, प्रैक्टिस। ओके मैम। मैम क्वेश्चन नंबर, सॉरी वीक 3। मैम मुझे एक बुक से प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, बुक वीक 3 में। हेलो। हाँ हाँ, मुझे बुक से मैंने बुक रीड करा था, मेरे को एक डाउट है कि हम लोग मतलब सैंपल में n-1 क्यों यूज करते हैं, लाइक वो अभी इस स्टैट्स 1 में वेरिएंस में पार्ट में डाल रहे नहीं हैं, तो है, वेरिएंस बट हम लोग। n-1 हम इसलिए करते हैं, अगर स्टैट्स 2 में तुम लोग अनबायसनेस पढ़ोगे, ठीक है, तो उस अनबायसनेस को प्रूव करने के लिए कि अनबायस्ड है, उसके लिए हम n-1 करते हैं। तो वो एक मेथड होता है अनबायसनेस को प्रूव करने के लिए, इसलिए हम सैंपल में हमेशा n-1 लेते हैं और पॉपुलेशन में कैपिटल N लेते हैं। एक्चुअली मैम वो उसको मैं अभी नहीं समझना पढ़ो, चाहता हूँ बिकॉज, अच्छा आगे है क्या मैम उसको वो अभी नहीं है, कॉन्सेप्ट? वो स्टैट्स 2 में है, अगले टर्म में, ओके। इस टर्म में नहीं। मेरा दूसरा डाउट इसमें ये है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट परसेंटाइल फॉर्मूला एंड व्हाई वी टेक एवरेज आफ्टर गेटिंग इंटीजर वैल्यू। लाइक मैम जब भी हम लोग परसेंटाइल निकालते हैं ना, तो मतलब होल नंबर मिलने के बाद भी मतलब कि देखो, परसेंटाइल का एवरेज। तो हमारे पास दो कंडीशंस होता है ना, ठीक है।
फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि फर्स्ट तुम चेक करते हो, पहले तो यहाँ पे पी होता है। पी हमारा क्या होता है, हमारा पहले 100 पी जो होता है वो हमारा जैसे 25% है, करेक्ट। तो पी क्या हो जाएगा मेरा 0.25, तो ये मेरा पी वैल्यू हो गया, ठीक है। फिर एन होता है, एन होता है कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे 9 है कि 10 है कि 5 है, ठीक है। ये हमारा सेकंड है। फिर एन पी निकालते हो, मतलब 9 इंटू 0.25 या 9 इंटू 0.75, मतलब अगर 75% या 25% निकालते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो वैल्यू आता है, तो ये चेक करना होता है कि हमारा इंटीजर है या नहीं है, ठीक है। अगर मेरा इंटीजर है, अगर मेरा इंटीजर आता है, इंटीजर मीन्स अगर होल नंबर आता है, तब हम क्या करते हैं, हम एनपी एवरेज लेते हैं, एनपी और एनपी+1 का, ठीक है। अगर मेरा इंटीजर नहीं होता है, तब मैं खाली जो मैं क्या करती हूँ, राउंड ऑफ करती हूँ वैल्यू को। मतलब इन द सेंस, अगर मान के चलो मेरा 2.3 है, ठीक है, मेरा एनपी की वैल्यू 2.3 है, तो ये इसको इंटीजर राउंड नहीं ऑफ है, करके तो 4 में मेरा जो करेंगे या 3 करेंगे। परसेंटाइल होगा वो थर्ड वाला जो वैल्यू होगा वो मेरा 25th परसेंटाइल होगा, एक्चुअली ठीक है। मैम ये सब चीजें मतलब बुक में लिखी हुई है तो मेरा ये क्लियर है मैम, बट मेरा डाउट ये है कि पहला तो मेरे को मतलब कि अंडरस्टैंडिंग करना है बढ़िया से कि परसेंटाइल का फॉर्मूला खुद से मतलब कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब जब निकालने की बारी होगी तो मतलब इंटरनली इसको समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। और दूसरा चीज डाउट ये है कि जब एनपी हम लोग को होल नंबर मिल जाता है तो फिर भी हम दो एनपी का मतलब कि एनपी प्लस 1 का एवरेज क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, बस वो देखो, जानना है मेरे हमारे पास परसेंटाइल परसेंटाइल निकालने का बहुत अलग अलग तरीका है। कोई कोई क्या निकालता है, जो हमारा डेटा पॉइंट दिया गया है। परसेंटाइल क्या होता है कि हमारा जैसे को। 100 पार्ट्स में डिवाइड 100 परसेंटेज में हाँ, डिवाइड उसको करते डिवाइड कर देते हैं, या तो हैं कोई डाल लोग 3 भाग में डिवाइड करके फिर इस भाग को देख के चलते हैं, इस भाग का हम फिर एक मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। मतलब सबका अलग अलग तरीका होता है। तो ये बस एक्चुअली एक मैम। हाँ। फॉर्मूला है एक परसेंटाइल यस यस। निकालने का, जो मैम ने बताया, ठीक है। हर एक मतलब परसेंटाइल निकालने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। आई बट अंडरस्टूड। इसमें हम खाली बट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हाँ ठीक हाँ, है। बस मेरे को मतलब मैम मैं इसी फॉर्मूला को लेके चलता हूँ। बट मेरे को हम्म इस फॉर्मूला को याद नहीं करना, मेरे को समझना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने परसेंटाइल को जितना पढ़ा है उसका मतलब ये हम्म होता है कि मतलब कि जो परसेंटाइल है, फॉर एग्जांपल आई गॉट 75 परसेंटाइल, इट मीन्स कि मैं 25% लोग मतलब मेरे से 25% लोग ज्यादा ऊपर हैं और सेवेंटी हम्म, फाइव परसेंट मेरे से लोग नीचे हैं। यानी कि मैं 75 परसेंटाइल मतलब 75th पोजीशन पाता हूँ मैं। हाँ। फॉर एग्जाम्पल आई मेरे पास 100 लोग हैं तो मेरे 75 परसेंटाइल आते हैं, इसमें कि मैं 75 नंबर पे हूँ। कुछ 25 लोग मेरे से ज्यादा हैं जिन्होंने अच्छे नंबर लाए हैं और 75 लोग मेरे से नीचे हैं। तो हम्म ये मैं समझता हूँ कि परसेंटाइल का मतलब ये है कि जो डेटा को है 100% में डिवाइड करता है। हम्म बट मेरे को जब पोजीशन निकालने की बारी आ रही है कि मेरे को 75 परसेंटाइल, इसमें कि मेरे को 75th पोजीशन निकालना है, तो जब मैं हम्म पोजीशन निकाल रहा हूँ तो इसको मेरे को कंस्ट्रक्टिव वे में समझना है कि अच्छा मैं मेरे को पता है कि मेरे को पोजीशन निकालना है। तो विदाउट अगर इन फ्यूचर मेरे पास फॉर्मूला ना भी हो तो मैं उसको कैसे फील करके समझ पाऊँ कि अच्छा इसको ऐसे बना के इसको सॉल्व करते हैं। और दूसरा डाउट मेरा ये था कि जब मेरे पास होल नंबर मिल जा रहा है, परसेंटाइल मीन्स कि मैंने मान लीजिए कि मेरे नंबर जो आती है, परसेंटाइल मीन्स पोजीशन में, और जब मैं पोजीशन 18 निकाल ले रहा हूँ या 75 निकाल ले रहा हूँ या अच्छा पोजीशन जो है वो 75 है, तो फिर मैं हम्म सम क्यों ले रहा हूँ, फिर नेक्स्ट इंटीजर का मैं एवरेज क्यों ले रहा हूँ। और दूसरा चीज ये है कि चलिए ये तो नीचे वाला तो क्लियर है, जिसका 3.5 अगर आया तो इस मीन्स की 3.5 कोई पोजीशन नहीं होता है, वो मिड पोजीशन होगा, तो वो भी बन सकता है। बट 3.5 को हम अभी अभी के लिए राउंड ऑफ कर देते हैं कि चलो फोर्थ पोजीशन ले लेते हैं। और मेरा सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे ये है कि हम एनपी प्लस 1 क्यों लेते हैं, यानी कि एवरेज क्यों लेते हैं इसका। और दूसरा कि इस परसेंटाइज फॉर्मूला को कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे समझ सकते हैं कि हाँ मेरे को 75 से पोजीशन निकालना है, तो उसको मैं कैसे निकालूंगा विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। और अगर फॉर्मूला है तो मेरे को उसका प्रूफ मतलब जानना था मैंने, बिकॉज मैंने ट्राई किया, ये समझ नहीं पाया मैं चैट जीपीटी वगैरह से। मुझे भी एक बार स्टडी तो करना पड़ेगा। मैं अभी एकदम से तो अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा कैसे यस मैम। समझाना है, तो मैं एक बार इसको स्टडी ओके करके फिर तो मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। मैम आप ना मतलब मैंने आपको ईमेल ईमेल पे भेज दूंगा मैम, आप मेरे को ईमेल पे सॉल्यूशन भेज दीजिएगा इसका। ईमेल हाँ। पे सॉल्यूशन तो नहीं हो, तुम्हें समझना है ना, तुम्हें सॉल्यूशन थोड़ी चाहिए। यस मैम।
हाँ नहीं, तो अगर कल, आप मतलब कि वहाँ पे लिख के समझा देंगे तो फिर मैं समझ जाऊंगा। हाँ तो वही, तो कल रिवीजन सेशन होगा, फिर उसके बाद अगर मैं तो कल या तो मतलब या तो मॉक डिस्कशन फ्राइडे को सेशन होगा, तो तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके मैम, मैं तो भी ये मेरा स्टडी एक करके डाउट है। फिर मैं बता दूँ। ओके मैम, यहाँ पे किसी का डाउट था 3.1 से, तो मैम उनका डाउट सॉल्व कर दीजिए, फिर मेरा 3.3 से डाउट है डायरेक्ट। ठीक है, 3.1 से कौन सा क्वेश्चन? यहाँ पे किसी एक No, ma'am. My question is practice assignment. प्रैक्टिस प्रैक्टिस असाइनमेंट। असाइनमेंट से, तो मेरा अभी 3.1. एक, Yes, ma'am. Question number 7, 8, 9. If the mean and sample standard deviation of this is this respectively, then mod of x1 minus x2, mean दे रखा है, standard deviation दे रखा है 6, सॉल्व कर। सॉल्यूशन गिवन है क्या इसका? Ma'am, I have another question. हम्म, Hello, ma'am. है क्या? सॉल्यूशंस दे अगर रखे हैं ना यहाँ पे? मैं ग्रेडेड असाइनमेंट कर लूं? क्या यस क्या? मैम, मुझे थोड़ा सा उसमें हाँ तो यहाँ सॉल्यूशन पे में देखो ना, मिस्टेक हो रही सोल्यूशन थी। दे तो रखा है। देखो हमारे पास डेटा पॉइंट्स दे रखा है ये, और हमारा सैंपल मीन दे रखा है 7। सैंपल मीन क्या होता है? इस पूरे जितने भी डेटाज है उसका एवरेज निकालना, मतलब 1 + 6 + 10 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 7। तो हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा x1 + x2 इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब आता है सैंपल यस मैम, ये स्टैंडर्ड समझ डिविएशन। में आ गया। ठीक है, अब सैंपल नीचे स्टैंडर्ड से ये जो डिविएशन, फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ से नहीं आ रहा। हाँ देखो अब हमारा सैंपल, देखो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का है s = 106/6। ठीक है, अब उनको सिंपलर फॉर्म में करने के लिए उन्होंने पहले सैंपल वेरिएंस किया। सैंपल वेरिएंस क्या होता है? s का स्क्वायर, विच इज 106/6, करेक्ट? यस मैम, ये भी समझ में आ गया, ओके, बस नीचे सो इसके नीचे अब सबसे यहाँ पे बस। सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1, करेक्ट यस मैम। है ना? तो यहाँ पे अगर देखेंगे, जो पहला न्यूमरेटर में जो 7 है वो तो मेरा मीन है, करेक्ट, और जो मेरा न्यूमरेटर में 7 है वो मेरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो समीशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 - 1, वो मेरा 106/6 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? मेरा xi माइनस 7 का होल स्क्वायर, इन द सेंस कि मेरा मतलब xi मेरा क्या है? ये सारे नंबर है ना, 1 6 10 14 4, ये सारे मेरे नंबर है ना। यस मैम। x1 दिस हो जाएगा 106 6 6 कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस x1। बट मैम ये सोल्यूशन में समझ नहीं पा रही। मैम मैंने जिसको सॉल्व कर दिया था, जैसे ये सॉल्यूशन है, बट मेरा भी आंसर करेक्ट नहीं आया था, बिकॉज यहाँ पे एक वेरिएबल जो था x2, उसको मतलब फैक्टर में कैसे कन्वर्ट किया वो मैं समझ नहीं पाया। हाँ तो ये देखो ना, ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है। अब ये लोग बोल रहे हैं सबमिशन ऑफ xi माइनस 7 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 106 डिवाइडेड बाय 6। 6 6 कौन सी कैंसिल हो गया। चीज अब मेरे का? पास नंबर्स यहाँ पे क्या क्या है? 1, 6, 14, 4, समथिंग ऐसा, यही नंबर्स है ना हमारे? 1, 6, 10, ठीक है, तो यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10, 14, 4। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये क्या हो गया? मेरा x1 हो गया, ये मेरा x2 हो गया, ये x3 हो गया, समथिंग ऐसा। तो यहाँ पे x मतलब x1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो x1 मेरा क्या है? 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 14 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस x1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस x2 - 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम इनको सॉल्व करेंगे तब मेरा 104 नंबर आ रहा है, प्लस x1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा एक इक्वेशन आ रहा है x1 + x2 = 14।
ठीक है, ये एक इक्वेशन है x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 14। तो मैं x2 को यस लिख मैम। सकती हूँ 14 माइनस x1। तो इस वजह से यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, x2 की जगह मैंने 14 माइनस x1 माइनस 7 का होल स्क्वायर यस लिख मैम, दिया। इससे वन ठीक है, वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, जिससे फिर हाँ, फिर क्वाड्रेटिक रूट निकाल के इक्वेशन सॉल्व बना, कर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से मेरी x1 की दो वैल्यूज ओके आ रही मैम, है। समझ में आ गया। ठीक है। क्लियर। मेरा भी एक्चुअली इसमें डाउट था मैम, बस आंसर नहीं आया था, मेरे प्रोसीजर मैंने सेम लगाया क्या क्या क्या? था। मैंने प्रोसीजर इसमें सेम लगाया था, बट मेरा आंसर सही नहीं आ पाया था, तो अभी आ गया है। हाँ, आंसर 0 आ रहा था, बिकॉज मेरा जो प्रोसीजर लगा था उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन आ रही थी वो आई थिंक 2 माइनस √7, और फिर इसके अपोजिट रखे दोनों कट के 0 आ जा रहा था। मैम मेरा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर AQ क्वेश्चन नंबर 3.3 है। एक मिनट, प्रैक्टिस असाइनमेंट इसका और भी डाउट्स थे ना? और अच्छा दूसरा कौन अच्छा। सा क्वेश्चन था? यस मैम, 8 and 9 बस। 8 वाला। तो if the mean of the observation is 15, mean of the observation 2n is 45, and mean of the observation is this, what is the mean of the observation? ठीक है, तो mean of the observation यहाँ पे x1 प्लस xn का निकाल दिया, x मैम प्लस 1 मिनट, वो सोल्यूशन दिखा दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ हाँ सर वो मिल जो जाएगा, आपने मतलब किया था। सबमिट करना। मैम ये तो बेसिक है ना, मतलब यहाँ पे x1 प्लस x2 को जो है ना उसी को यस कन्वर्ट कर मैम, दिए x2 को, और x2 की जगह पे ले x1 की लिया वैल्यू पुट मैम कर दी। स्क्रीनशॉट। हाँ, तो वो ये तो सबसे पहले मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो x1 से xn तक का है वो, तो यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई x1 प्लस xn टिल xn इक्वल्स टू 15n। सिमिलरली यहाँ पे मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ x1 टिल x2n वो हमारा 45 है। तो ये x1 और x2n तक का हमने उसको और एक्सपैंड कर दिया, तो क्या हो गया, पहले x1 से xn, फिर xn को n+1 n+2 ऐसे ऐसे करके 2n तक जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 2n, तो ये मेरा एक और इक्वेशन हो गया। एक्सक्यूज मी मैम। ठीक है, और फिर उसके यस बाद यहाँ पे अगर हम देखें, हमें पता है कि x1 प्लस xn तक मेरा 15n के इक्वल है, तो इसलिए 15n प्लस xn+1 से x2n क्या हो जाएगा मेरा, 2n इंटू 45 90n। तो मेरा ये एक और इक्वेशन आ गया। समझ आ रहा है? हेलो। नो मैम। देखो यस मैम। देखो यहाँ पे बोला है आवाज जा कि रही है मैम? x1, हाँ एक मिनट, x1 प्लस x2 टिल xn, ये मेरा मेरा क्या, सेम इसका जो क्वेश्चन था, तो इसी में बस। xn क्या हो जाएगा, 15n। प्लीज सिमिलरली मैम बोला बता गया है देने दो x1 ब्रो। प्लस x2 टिल x2n का जो एवरेज होगा वो मेरा क्या आ रहा है, 45। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x2n उसको और एक्सपैंड करके लिख रही हूँ, पहले xn तक जाएगा, फिर xn+1, फिर ऐसे ऐसे जा जाके xn+n तक, मतलब 2n हो जाएगा ये, तो ये x2n हो गया, डिवाइडेड बाय 2n, ये हो गया 15। ठीक है, यहाँ पे मेरे एक इक्वेशन ये आ गया, तो इस चीज को मैं लिख सकती हूँ 15n प्लस xn+1 टिल x2n इक्वल टू 45 इंटू 2 90n। ठीक है, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा xn+1 से x2n जो है मेरा एक नंबर आएगा। तो सिमिलरली मेरा यही सेम प्रोसीजर मेरे को करते जाना है, तो मेरे पास ऐसे इक्वेशंस बन जाएंगे। तो फिर अब मेरे को क्या, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 2xn+1 से 2x2n 3x2n से ये निकालना है, तो बस इसमें बस वैल्यू 2 कॉमन हो जाएगा, तो xn+1 से xn2n और x2n+1 से x3n की वैल्यूज, दोनों इक्वेशन की वैल्यू पुट करके मेरे को मीन निकालना है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर मैम। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन 9। मैम मेरा सेम क्वेश्चन। हाँ, हेलो। मेरा हेलो। सेम क्वेश्चन था, मतलब इसमें 3.1 में 7, 8 और 9, तो मेरा जो 8 वाला जो क्वेश्चन है मैम, इसका जो हाँ, एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, इसका जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस उसको मेरे को आप समझा दीजिए। ये तो सॉल्यूशन मेरे को मिल मैंने गया भी था। समझाया। नहीं नहीं, एक्सप्रेशन को एक्चुअली में लाइक वहाँ पे मैम क्वेश्चन में जाइए ना, एक्सप्रेशन में जाके यहाँ पे लिखा है ना मैम कि x1 to xn, और x1 to x2n, और x1 to x3n। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, ये यहाँ पे जो आके फिर x मतलब ये एक्सप्रेशन ही नहीं समझ पा रहा था मैं। ये तो बस ऑब्जर्वेशंस लिखे गए, x1 x2 x3 ऐसे xn तक जा रहा है,
x1 x2 ऐसे x2n तक जा रहा है ऐसा। ये जो लास्ट में पूछ रहे हैं ना मैम 2x प्लस, मेरे को लग रहा था इसमें कुछ एडिशन भी होगा क्या? हम्म। नहीं, इसमें तो बस ये नंबर दिया गया है कि 2 × xn+1 2 × xn+2, बस 2 मल्टीप्लाइड हो रहा है हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ। तो इस वजह से हमने लास्ट में यहाँ पे 2 कॉमन लिया है। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 में भी क्या है, 3x इन x2n+1 इन प्लस 3x2n+2 ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे भी 3 कॉमन है, 3 खाली मल्टीप्लाई हो रहा है ऑब्जर्वेशन के साथ, तो इसलिए 3 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया। और जो हमारा सम का जो इक्वेशन आ रहा है 12n हो रहा है और एक 75n आ रहा है, तो बस वो वैल्यू पुट करके हमने निकाला है। देखता हूँ मैं एक बार फिर से सॉल्व। क्वेश्चन हाँ, नंबर 9, इसमें मेरा भी सेम डाउट था। if the mean and standard deviation of the observation are this and the mean and standard deviation is this, then what is the sum of A and B? Mu and this, the mean and standard deviation of A into 3x1 plus this respectively, using the properties of standard deviation. Sigma 2 is 3 into A into sigma 1. Sigma 2? ठीक है। Given sigma 1 is this, sigma 2 is this, A की value निकालिए। Using properties of mean, mu 2 is equals to this, since this is going given to be this, B की value निकालिए। हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारे पास x1 x2 x3 की कुछ वैल्यूज है xn तक। इसका जो है हमारे पास मीन दिया गया है और सिग्मा 1 दिया गया है, ठीक है। फिर हमारे पास एक क्वांटिटी है 3x1 प्लस b1, ठीक है, a 3x2 प्लस b2, ये हमारे पास कुछ क्वांटिटीज है, ठीक है। तो b है, b है, ठीक है, b1 नहीं है, b है, ओके। तो यहाँ पे मेरा x1 की जो वैल्यूज, x1 xi की जो मीन आ रहा है हमारा, इस पॉइंट का जो मीन है वो हमारा क्या है, μ1 है, और स्टैंडर्ड डिविएशन है वो हमारा सिग्मा 1 है। अब मेरा इस ये जो नंबर है a इंटू 3xi प्लस b, इसका मुझे अगर मीन निकालना है तो क्या हो जाएगा, a इंटू 3 μ प्लस b, है कि नहीं। Yes, ma'am. और मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा, 3 × a सिग्मा 1, क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट टर्म अगर हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो मैटर नहीं करता, करेक्ट। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a इंटू 3xi प्लस b, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3xi प्लस ए बी। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 3 × axi, और ये हमारे कांस्टेंट टर्म है तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई क्या हो जाएगा, सिग्मा 1। तो इस वजह से मेरा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 a इंटू सिग्मा 1 हो गया, ठीक है, क्लियर Yes, है। ma'am. फिर यहाँ पे वैल्यूज हमें दी गई है, सिग्मा 1 दे रखा है, सिग्मा, Yeah. बस इसमें वैल्यूज पुट करके ए और बी की वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड किया है, क्लियर है, Yes, ma'am. अंडरस्टूड, Yes, यस ma'am. और नो, यस, ठीक है। तो डाउट्स क्लियर हो गए सारे। मैम मेरा है अभी। Yes, ma'am. ओके, हाँ बोलो। मेरा AQ 3.3 से डाउट है मैम। क्वेश्चन नंबर भूल गया क्वेश्चन नंबर, मैम। क्वेश्चन नंबर मैंने लिखना भूल गया मैम, बट मेरा ये डाउट मैंने लिखा है कि मैम ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ जो आउटलायर्स होते हैं मीन मीडियन मोड का। हेलो। हाँ हाँ बोलो। तो मैम जैसे कि सबसे ज्यादा जो आउटलायर से इफेक्ट होता है मैम वो मीन होता है, फिर क्या उसके होता है, बाद मीडियन होता है, फिर उसके आउटलायर से जो सबसे ज्यादा मैम इफेक्ट होता है वो मीन हम्म होता है मैम, राइट। फिर हम्म उसके बाद मीडियन होता है, देन मोड होता है। बट यहाँ हम्म पे मैं क्वेश्चन नंबर बोलना
गलती से भूल गया मैं यहाँ पे लिखना। और यहाँ हाँ, पे एक ये क्वेश्चन क्वेश्चन होगा नंबर मैम। 7 होगा। हाँ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा जिसमें मेरे को ये समझना है मैम कि उसमें ये लिखा हुआ था कि मैम वो क्वेश्चन निकालिए ना, मेरे को थोड़ा दिक्कत आ रहा है। आप स्क्रीन नहीं देख रहे? हाँ, which of the following statements is true? More is the- मैम मेरा ये कहने का मतलब ये है मैम कि अगर मान लीजिए कि मेरा जो आउटलायर होता है मैम, हेलो हाँ हाँ, बोलो। मैम मान लीजिए मेरे पास जो डेटा है मीन का वो है 6, 8, 10 एंड 12। हम्म। हेलो, तो हाँ इसके हाँ, जो मैं मैं समझ ऑर्डर, रही हूँ। और इसमें मेरे पास एक आउटलायर है, दो आउटलायर है मैम, जिसमें एक आउटलायर है 100 और दूसरा आउटलायर भी 100 है। हम्म। तो ऐसा, तो अगर मान लीजिए कि पहले का जो मीन आता है उसमें दो आउटलायर है तो मीन जितना आएगा वो तो आएगा, मगर इसमें हम्म। अगर मैं मोड निकालता हूँ मैम, और चूंकि जो मोड है मेरा वो दोनों ही आउटलायर है, हम्म। तो मेरा मतलब कि मोड तो फिर ज्यादा इफेक्ट होना चाहिए ना। वो मोड तो क्या होता है तो हाँ, तो मोड हमारा, देखो हमारा मीन जो है वो ज्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि हमारा जो एवरेज हम निकालते हैं वो एकदम मतलब सबको डिपेंड करता ऐड है कर। मैम डेटा हाँ। पे। यस मैम, मैं इसको समझ चुका हम्म। हूँ, बस मेरा एक सिंपल क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है जो कि हम्म। जिसका जो मतलब नंबर है 6, 8, 10, 12 और 2 टाइम्स मैम 100 है, यानी कि हम्म। 100 एंड 100। व्हाट इफ कि अब चूंकि 100 यहाँ पे दो बार है, तो ये जो हो गया ये मोड हो गया क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी दो बार है, सबसे ज्यादा है यहाँ पे। हम्म। तो अगर ये दोनों मतलब कि ये मोड तो हो गया मेरा, और हम्म। अनफॉर्चुनेटली ये जो दोनों जो है ये आउटलायर निकल गए, हम्म। तो अभी मेरा मोड ही मेरा आउटलायर बन गया। तो- तो पहले, तो सबसे ज्यादा तो फिर मेरा मोड ही इफेक्ट होगा ना मैम, क्योंकि मान लीजिए इसमें कोई मोड नहीं था और ये दो आउटलायर कहीं से आ गया अलग नंबर, और ये दोनों मतलब कि इतना इफेक्ट किया कि एक मोड क्रिएट भी कर दिया जो कि सबसे ज्यादा इफेक्ट हो गया। हाँ, तो फिर क्या कहना चाहते हो कि मीन लेस इफेक्टेड है? मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि एक जनरल केस में तो मैंने ये पढ़ा बुक में कि मीन जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, देन मीडियन होता है, देन मोड होता है। मगर एक हाँ, सिनेरियो तो ऐसा भी हो सकता है ना मैम कि आउटलायर जो है एक नंबर मिलता है जो कि 100 तो होगा, इस और चीज एक का और ये जो आउटलायर। डेटा है, जो डेटा तुमने दिया है, उसका अगर तुम मीन भी निकालोगे तब भी वो ज्यादा इफेक्ट तो करेगा ही ना। कैसे मैम, अगर मान लीजिए कि क्यों? इसमें कोई 1 6, अगर तुमने क्या बोला है, 1 6 9 100 100 जो भी बोला है, इसका जो मीन नहीं नहीं मैम, निकालोगे। आप मतलब उसको लिख लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ 6, 8, 10, 12। अरे, मतलब कोई भी एक डेटा ले लो यार, कुछ भी डेटा ले लो, उसी पर्टिकुलर डेटे का तुम मीन निकालोगे, उसी पर्टिकुलर डेटा का तुम 6 8 10 10, 12 12 100 100। और दो करेक्ट। बार 100। यस हाँ, तो मैम। इस चीज का तुम मीन निकालोगे, इस चीज का तुम मॉड निकालोगे, इसी चीज का तुम मीडियन निकालोगे ना, अलग अलग डेटा का तो नहीं निकालोगे ना। हाँ हाँ ओके मैम, ठीक हाँ। है, तो इसका मीन जो मैम जो भी आएगा, तो मान हम्म। लीजिए ये जो दो 100 आए हैं मेरे पास एक्स्ट्रा, ये हम्म। दोनों ही आउटलायर है, हम्म। तो फिर इस डेटा का तो कोई एक्चुअल मोड नहीं था, मगर दो आउटलायर आने के वजह से इसका एक मोड भी क्रिएट हो जा रहा है। हम्म। और इसमें जबकि चूंकि कोई मोड नहीं था, ये दोनों ही आउटलायर है, तो क्या एक मोड क्रिएट भी हो जा रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है मतलब फिर ये भी एक सिनेरियो हो सकता है ना मैम रियल डाटा में। हाँ, तो हो सकता है कभी कभी। तो मोस्टली इन जनरल हम ये कह के चलते हैं कि हमारा जो मीन है वो ज्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि वो सारे वैल्यूज को कंसिडर करके चलता है। पर मीडियन मैम हमारा क्या है, हम व्हाट इफ पहले कि सॉर्ट जब करते जब हैं, मैं, फिर उसके बाद खाली जो मिडिल वैल्यूज है वो उसी को ही कंसिडर करके चलता है, ना कि आउटलायर्स को। इस वजह से मीडियन जो है उसको बोलते हैं कि बहुत लेस अफेक्टेड होता है। मोड जो है और लेस इफेक्ट होता है क्योंकि वो खाली क्या बोलते हैं, खाली फ्रीक्वेंसी को देखता है। ठीक है, मतलब और आउटलायर्स मोस्टली क्या होता है, हमारे बहुत सारे डेटाज में आउटलायर्स ज्यादातर क्या होता है कि या तो वो एक ही बार अकर करता है या 2 बार जो भी है, 1 बार 2 बार कुछ भी जो भी टाइम अकर करता है। आउटलायर जो है कभी भी मॉड इतना केसेस में आता नहीं है, और कभी आ भी गया तो वो हमारा कुछ स्पेशल केसेस हो जाएगा, वो डेटा
डेटा या तो वो डेटा सही नहीं है, अगर तुम्हारा आउटलायर्स ही बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो तुम्हारा वो डेटा सही नहीं है मतलब, तो ये केसेस होता है। ठीक है, तो मोस्टली हमारा बट मीन होता है, कैन फिर मीडियन होता है, फिर मोड होता है। जो तुम सिचुएशन कह रहे हो बहुत ही रेयर केस होता है, ऐसा केस होता नहीं है, क्योंकि तुम जब डेटा कलेक्ट करते हो तुम ये देखते हो कि आउटलायर्स जो है वो कब से कम आए, या तो अगर आउटलायर्स आते भी हैं तो वो हम रिमूव कर देते हैं, ऐसा। ओके मैम, ठीक है। मतलब कि वो जो आउटलायर रिमूवल फॉर्मूला जो होता है, जैसे कि हाँ Q1 माइनस 1.25 आई थिंक, सॉरी हाँ हाँ हाँ, 1.5 और फिर एक आई ही बात। क्यू आर है। हम्म, तो पहले ये अप्लाई करते हैं डाटा पे, फिर रियल लाइफ में मतलब कि देखते हैं करेक्ट डेटा करेक्ट। को। हम्म। ठीक है मैम, ये भी हो गया। एक्यू नंबर 3.4, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है मैम कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट वेरिएंस डजंट गेट अफेक्टेड फ्रॉम आउटलायर्स, इट प्लीज एक्सप्लेन मी फंडामेंटली नॉट एक्सेप्टेड, हाउ नॉट हाँ, तो एक्सेप्टेड। हमारा जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, अगर हम कुछ भी स्केलिंग अप करते हैं तो हमारा वो स्केलिंग से तो होता नहीं है ना। हाँ मैम, आई नो ये बुक में लिखा हुआ है कि अगर मतलब कुछ ऐड करते हैं तो फिर मतलब कि इस तरीके से उस पर इफेक्ट नहीं करता है, बट फंडामेंटली जो आउटलायर्स, जो वेरिएंस है, वेरिएंस का जो फॉर्मूला मैं पढ़ा था मैम, तो सिग्मा एक्स आई माइनस माइनस एक्स बार था, जो कि मीन था मैम। तो चूंकि मैम हम्म, डेटा में मीन जो है वो इंक्लूड हो रहा है, और मीन अफेक्ट करता है आउटलायर से, तो फिर मतलब ये कैसे इंडिपेंडेंट हो गया आउटलायर से, बस मेरे को इसको समझना था फंडामेंटली, कि मेरे को इसको आप सॉल्व करके दिखाएंगे तो मेरे को हमारा ज्यादा स्टैंडर्ड क्लियर। डिवीजन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, करेक्ट, यही होता है डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, अगर लेके चले तो। ठीक है, तब यहाँ पे आप ये बोल रहे हैं कि हमारा एक्स आई जो है एक्स बार, तो हमारा डिफरेंट हो जाएगा एक्स बार। तो अगर स्टैंडर्ड अगर एक्स हमारा सिग्मा है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स प्लस एक बन जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ summation of xi plus a plus x bar minus a whole square divided by n minus 1। तो ये a से ये कैंसिल, फिर क्या हो जाएगा समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अगर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मान के चलो सिग्मा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस a क्या हो जाएगा समेशन ऑफ xi प्लस a माइनस x बार माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। a से a कैंसिल, तो मेरा तब भी ये क्या हो गया सिग्मा के इक्वल ही आया। एक बार फिर से मैम शुरू से समझा लीजिए। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मेरा सिग्मा लेके चल रही हूँ, ठीक है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। हेलो। हाँ, अब मेरा क्या हाँ है यस यहाँ मैम। पे मैं एक इंक्रीज कर रही हूँ, मतलब ए के जगह मेरा क्या है 0.1 है, मैं मतलब मैं निकाल रही हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस 0.1, करेक्ट। यस मैम, कोई कांस्टेंट है ये, समझ गया। आवाज नहीं आ रही। यस मैम, ये कोई कांस्टेंट है, मैं समझ गया। हाँ, वही हेलो। ए कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा समेशन ऑफ ये जो एक्स आई है उसमें सारे नंबर्स में ए कांस्टेंट तो ऐड होगा ही होगा, यस मैम। माइनस मेरा क्या है एक्स बार है, अगर एक्स स्टैंडर्ड जो मेरा मीन है, ठीक है, एक्स का वो मेरा एक्स बार है, तो मीन ऑफ एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा एक्स बार प्लस ए। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बार प्लस ए हो गया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई यस मैम। प्लस ए माइनस एक्स बार माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, ए से ए कैंसिल, तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। तो ये सेम क्या हो जाएगा मेरा सिग्मा के इक्वल, इसलिए स्केलिंग भी अगर करोगे तो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन सेम रहता है। क्लियर। हाँ यस मैम, क्लियर। हाँ मैम, मेरा थोड़ा बुक से डाउट है। क्या आ, मतलब सर ने स्टैटिस्टिक की एक बुक दिए थे ना मैम, उससे डाउट है बुक से। बुक्स में डाउट है। यस मैम, मतलब थोड़ा सा
इसमें कहीं तो पढ़ने में दिक्कत हो रहा था। पेज नंबर लिखा है मैम, पेज नंबर 40। हमको लोड करना बुक्स का। मैम वो मतलब इंट्रोडक्शन में जाएंगे ना, तो प्रिस्क्राइब बुक्स हैं, तो उसमें बुक्स सर ने रख रखा है, स्टैटिस्टिक्स 1। मैम पेज नंबर 40। हाँ बोलो। एक्चुअली मैम यहाँ पे मीन ऑफ ग्रुप डेटा है, तो मेरे को एक्चुअली इसका रियल लाइफ में मतलब समझना है। क्या? यहाँ पे मीन ऑफ ग्रुप डेटा है ना मैम, हाँ तो मेरे को एक्चुअली में इसका रियल लाइफ मतलब समझना है। लाइक मैं तो इसमें ये समझा था कि अच्छा यहाँ पे हाँ, तो एग्जांपल दिए ग्रुप गए डेटा कि क्या हो गया? ग्रुप डेटा का मतलब होता है कि तुम्हारा वन कितने टाइम्स। यहाँ पे पहले हमारे पास क्या है, कुछ वैल्यूज होती थी, 1 2 3 4 5, इसका मीन निकालना है। अब जैसे मेरा डेटा 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 ऐसे मेरे पास 1000 डेटा है। तो उसको क्या है, मैं वन को कैसे लिखूंगी कि मेरे पास 40 टाइम्स रिपीट हो रहा है, टू मेरा 30 टाइम्स रिपीट हो रहा है, थ्री मेरा कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है, 30 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इस वजह से ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया, ये मेरा डेटा वैल्यूज हो गया। तो मीन मैं कैसे निकालूंगी? मीन क्या है, मैं सारा 1 + 1 ऐसे 1000 टाइम्स ऐड करूंगी, तो मैं कैसा कर सकती हूँ, 1 × 40 टाइम्स प्लस 2 × 30 टाइम्स प्लस 3 × 30 टाइम्स, बस सिंपल मैथ्स। ओके, क्या? उसका सर्टेन टाइम उसका डाउट रहता है मैम, अभी तक मतलब तुरंत क्लियर हो जाता है। सॉरी? एक्चुअली उस टाइम पढ़ने टाइम डाउट रहता है ना, अभी यहाँ पे आप बताते तो पहले ही क्लियर हो जाता है, आप कंप्लीट करने से पहले ही ठीक है कोई नहीं। पॉसिबल। अच्छा मेरा तो कंप्लीट हो गया अभी। मैम मुझे कुछ सवाल है, मतलब इससे लेके कोर्स को लेके। कोर्स को हेलो। लेके? यस मैम, लाइक आप तो मैम यहाँ पर से आपका ग्रेजुएशन तो इससे कंप्लीट हो गया होगा ना मैम, आईटी मद्रास से। आप लोग शायद 2022 वाले बैच वाले हो मैम। क्या क्या? मैम आप लोग 2022 वाले बैच के है ना? 2022 22 का बैच? मैम आपका जैसा मैं ईमेल देख पा रहा हूँ, हम्म। तो वो ना मतलब एक सेकेंड, मैंने आपको ईमेल कहाँ गया, एक मिनट मैम बस। मैम आप लोग 2022 के स्टूडेंट है ना मैम? नहीं। एक्चुअली मेरे को इससे रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए थे कि स्किल्स वगैरह पे कौन से काम करना चाहिए। अभी तो हम लोग फाउंडेशन में है, क्या क्या तो क्या? मैंने मतलब कि मैंने एक्चुअली आईटी मद्रास की प्लेसमेंट आई थी, तो उसमें मैंने ये देखा कि आईटी मद्रास जो है वो लाइक सेशन टीचर को भी जॉब में कंसिडर कर रहे हैं, तो वो जो कि बहुत बड़ा नंबर था। तो बस मेरे को ये जानना है मैम कि आप लोग तो सीनियर रहे हैं, तो मुझे ये समझना है कि क्या क्या स्किल्स पे अभी पैरेलली काम करना चाहिए, या फिर सिर्फ कोर्स पे डिपेंड रह सकते हैं, या फिर कुछ और स्किल्स ऐसे होनी चाहिए जो पैरेलली हम लोग को ऐड करते हुए चलना चाहिए। हाँ, तो तो लाइक अगर तुम ये कोर्स कर रहे हो डेटा साइंस, मीट कर तो पाए इन मार्केटिंग। हाँ, एक्स्ट्रा तो हेलो। तुम्हें skills, करना ही पड़ेगा ना, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, या फिर एक्स्ट्रा तुम इंटर्नशिप्स वगैरह करो, प्रोजेक्ट्स वगैरह और प्रोजेक्ट्स वगैरह करो, और प्रैक्टिस करो चीजों को। तो मतलब बाहर जो लाइक रियल मैम लाइफ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम कोर्स, लाइक कोर्स में जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कि अच्छा मतलब ये पढ़ाया जा रहा है स्टैटिक्स वगैरह ये, और जो भी डेटाज है, बट मार्केट को अच्छे से समझने के लिए, मार्केट की डिमांड के लिए कि लाइक हम लोग को कुछ और एक्स्ट्रा स्किल्स
ऐसे ऐड करने पड़ेंगे। स्किल्स की बात करो, सॉफ्ट स्किल्स नहीं मैम कि कम्युनिकेशन या फिर ये या फिर कुछ और, बट हाँ, ऐसे सॉफ्ट कुछ स्किल्स जो वगैरह ये सब तो ऐड करना ही पड़ेगा ना कि सॉफ्ट स्किल्स क्या है तुम्हारे पास कि क्या बोलते हैं। यस मैम, कम्युनिकेशन हो गया, फिर हाँ, बॉडी लैंग्वेज हो गया, कम्युनिकेशन, तो ये सब चीज, बॉडी लैंग्वेज हो गया, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीजें, ये सब भी तुम्हें करना पड़ेगा। ये सब तो चीज ठीक है मैम, ये सब चीज समझ रहा हूँ, बट स्किल्स पे पूछ रहा हूँ जो आ, लाइक मैं किसी इंडस्ट्री में काम कर सकूँ। फॉर एग्जांपल एआई अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो एआई में मतलब क्या अभी देखना चाहिए मैम हम लोग को उधर कोर्स के अरे, पैरेलल में। लाइक फॉर एग्जांपल अभी वेब डेवलपमेंट में सीख रहा हूँ मैम, तो इसमें मैं पढ़ रहा था कि जो एंथ्रोपिक एआई जो है, क्लाउड एआई, तो ये मतलब इस तरीके से रिप्लेस करे, तो हम लोग को किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अभी राइट नाउ, देखो ये सारा जो एआई पे? ये जो हमारा जो लाइन है, डेटा साइंस वाला लाइन, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं। और जिस क्या बोलते हैं, जनरेशन टू जनरेशन बहुत सारी चीजें, अभी एआई आ गया, क्लाउड एआई आ गया, जेन एआई हो गया, ये सारी चीजें, तो हर जनरेशन के हिसाब से तुम्हें हर चीज को ग्रास्प करना है, सारी नॉलेज ग्रास्प करनी है। तो इन पर्टिकुलर हम कह नहीं सकते कि हाँ अगर ये कर लोगे तो पूरा साल चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर 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 एक साल नया कुछ ना कुछ नया आता है, तो हर उसको सीखो। ठीक है, ताकि क्या है, तुम्हारा जॉब अपग्रेडेशन हो। तो तुम्हारे पास नॉलेज जितना उतना जितना नॉलेज तुम्हारा होगा करंट करंट चीजों में, उतना ज्यादा बेटर होगा। ओके मैम, ठीक थैंक यू मैम। है, ओके, ठीक है, ओके, दैट्स इट, मीटिंग, कैन आई एंड द मीट नाउ? यस, मैम, okay then. Sure. Okay, bye everyone, have a great night. Good night. गुड नाइट। Thank you. Yeah, good night everyone.